So we find it immense pleasure standing in front of such a great people, and we know that there's a lot of workload that you already have, and sparing so much of time, entire day for us is meant lots for us. So we just briefly want to share a story how everything began, how we became so confident, how we started believing that yes, something might change, inequality might reduce, something may turn good that we earlier believed would not. So my name is Usha. I'm a final year student. I am pursuing integrated masters in life sciences at Ahmedabad University. And I completed my schooling from Jawaharlal Navodaya Vidyalaya, Kankund, South Goa. And if I talk about my journey from schooling till the final year of my college, my journey has been immensely and wonderfully shaped by the mentors that I met throughout my journey. So from my school teachers to the mentors that I met at Ahmedabad University to the Karta mentors, everyone has, given the guidance at the right time, because guidance given at the right time is most important to make anything possible. So when I was in class 12th, our English teachers just came to us, called me and few other girls, and asked to apply for Indian universities via Karta, and that's how we got connected to Karta. And then while applying for different Indian universities, we all had this doubt in our mind, like, how is this possible? Like, okay, we'll get scholarship, but how is anything going to be possible? Okay, so when Aditi told that there used to be late night messages, calls, I actually felt that, because it was so true. Like, even if we call them at 2 a.m., the Karta mentors, they would just pick it up and say, हाँ उषा, क्या हुआ, क्या बात है, कोई परेशानी है? So this was so true, and I felt it, because I have called a lot of time to Karta mentors that I'm not feeling right. This is what happened, and I don't think so. It should have been happened, and something the other way. And I also want to talk about the community I come from. I come from a Banjara community. It is believed that they migrated from Rajasthan to Karnataka to earn bread, and after from Karnataka to Goa, they migrated again to search for job opportunities and all. In last panel we talked about inequality, but my heart felt so nice when we talk about the girls facing inequality majorly, because we would talk about inequality everywhere in the world, but the first inequality that happens is in our home. Our brothers get more chance and we don't. But I am so proud and so happy that our parents didn't think that way. That is why I am here. That is why Achal is here, Pooja is here. Tejul was about to speak so boldly. We are very proud of our parents to not think that way, that girls don't get equal opportunities. And moving on, coming from it was a very huge transition from schooling to university. And the first question that came in my mind, हमसे friendship कौन करेगा? I mean, हम कैसे इतना confidently बात करेंगे? But the Ahmedabad University, I must say, has such a good structure. Our first friends who became were our seniors. We have the student mitra policy, where when we arrived the first day, they came, received us, and there wasn't like a need-based scholarship, merit-based scholarship, or the students who are paying and staying are treated any way other way. We were asked the same questions, where are you coming from? We were asked the same things, what you aspire to be in the future, and we were given the contact number equally so that we can reach out to them and talk to them. And that's how we were able to make a lot of friends. And after that, I don't think so we ever felt that we were not included, or we were not felt inclusive about anything else.
So there are different internship opportunities that we also got, which helped us to build a lot of confidence and look at the job opportunities in a, like, to even think there are different job opportunities that we knew before. Because in class 12th we used to believe that clearing JE and NEET, becoming a surgeon, doing MBBS, or being an engineer, is that's all is a very prestigious job. Indeed it is. It's not a false statement, but we earlier not used to think beyond that. Now if I have to talk about my interest, then I feel that I might become a researcher. I'm more interested in research now. So before I didn't knew that came to my mind. I did different opportunities. In second year I did internship at Center for Energy, Environment and People. Such a huge prestigious opportunity, because like a second year student getting an internship at such a huge like such a prestigious place is very much impossible sometimes, but I did got, and I thank Anuj sir for being here, because I have seen the workload they go through, and sparing a day for us is immensely grateful for them. And also I did my third year internship at Trent. At Trent also I expressed my interest in sustainable packaging, because I'm deeply interested in ecology and environmental science. When I told this to my university mentor, she asked me very fundamental question: why are you even interested in ecology and environmental science and not any other thing? And that question got stuck in my mind, and I was thinking about it. Then I felt, why not study about environmental science? Because we all are feeling the heat, right? We all are feeling there is more than heat, more than cold, more heat than usual, more colder than usual. So why don't, not only me but all of us should be thinking about all these things that are going on in the place. And since I'm a final year student, I'll be graduating next year, and I'm looking forward for a lot of opportunities that I can get, and via my interest I can serve the community. Thank you. Okay, before the other scholars share their story, I would also like to call Suvir. Hello everyone, thank you for coming here today. I am Anchal Gupta. I am from Raebareli, Lucknow, Uttar Pradesh. But when I was 2, my family shifted to Theog, Shimla, Himachal Pradesh for source of income. And in the 9th class, I gave an exam for Jawahar Navodaya Vidyalaya, Shimla, and I got selected. The journey started from there. Like, before that, I don't know about what I will do in the future, like about colleging and having any experience or doing any career related. So when I was in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Shimla, I don't know about like how to go in a college, how it will be work. Like, I want to study, but I know my family won't be able to like support me financially. So I thought I will be doing my like college in a local area only, and after that like got married, or that's the thing. So when I was in 11th class, I got to know about Karta, like in the Karta Access program, and one of my teachers support me, like, if you want to continue this access program, I will help you. Like, we had many sessions, like in evening, in night, every time we have to attend that sessions also. It's important to continue like Karta program. So he helped me a lot, and I am very grateful for that. And when I got selected for Vidyashilp University, Bangalore, many people said, like, in society, many people say, like, how will you send your daughter to so much far, like from Shimla to Bangalore? It's too much like difference. And that time my family supported me and defended me, like, she can go and she can live there. I know her. So that's my university journey started. And in 4 year of Bangalore journey is like very
amazing, and I got to know so many things, and this is a big part of like changing my life, because before that I was very introvert and not to talk so much about like in front of people. I have a stage fear, but I am right now here and I am speaking to about my journey. And now I am graduating from Vidyashilp University, and my degree is like BTech Computer Science. Specialization is data science and minor is psychology. And I am also doing like 6-month internship, so it's a continue, and that's all my saying. हेलो एवरीवन, मैं पूजा गुप्ता। बहुत सिमिलर है हमारी स्टोरीज। जब मेरे जन्म के पहले ही मेरे पेरेंट्स, मैं रहने वाली सुल्तानपुर यूपी से हूँ, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही मेरे मम्मी पापा शिफ्ट हो गए थे मुंबई के एक छोटे से गांव में जिसका नाम कामन गांव है। एंड वहाँ से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है। मेरे और मेरे भाई के बीच में लगभग सिर्फ 1.5 साल का अंतर है। तो मेरे पापा का माइंडसेट देखो कैसा था। दोनों सेम स्टैंडर्ड में रहेंगे, कोई भी परेशानी आएगा तो वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे पढ़ाई में। लेकिन हुआ क्या, जिला परिषद स्कूल में थी जब मैं 5वीं में थी, वहाँ पे मेरे क्लास टीचर ने मुझे हेल्प किया। मैंने नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम दिया, वहाँ पे फिर मैं नवोदय में चली गई, मेरा भाई सेम स्कूल में रह गया। तो पापा का माइंडसेट वहाँ पे काम नहीं आया। लेकिन हाँ, जैसे इन लोग ने शेयर किया कि हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट बहुत अलग है। लड़की पढ़ेगी, लड़की घर का काम करेगी, लड़का पढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा ने हमेशा मुझे ज्यादा सपोर्ट किया क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिव हूँ, थोड़ा कराटे योगा हर एक चीज में बचपन से पापा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, नवोदय में गई। नवोदय में टीचर्स ने हेल्प किया। 11th-12th में सेम प्रॉब्लम, हम दोनों भाई बहन 11th-12th में है। कॉलेज एजुकेशन कोई एक करेगा। वहां पे पापा ने हम दोनों के एक चॉइस दिया। ऐसा नहीं कि लड़का है तो लड़के को फैमिली संभालनी है तो लड़का पढ़ेगा, लड़की हेल्प करेगी, शादी हो जाएगा, ऐसा नहीं था। हम दोनों को चॉइस दिया, तुम दोनों डिसाइड करो कौन पढ़ने वाला है आगे और कौन फैमिली को सपोर्ट करेगा। तो लेकिन वो सबसे बड़ा जो हमारे घर का चैलेंज था वो कर्ता इनिशिएटिव ने सॉर्ट किया। जब मैं 11th में थी, कर्ता एक्सेस प्रोग्राम के थ्रू मेरा 12th खत्म होने के पहले ही मेरे पास यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑफर लेटर्स आ गए थे मेरे आगे के जर्नी के लिए। पेरेंट्स का एक जो फाइनेंशियल बर्डन था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। मेरे भाई का भी ग्रेजुएशन हुआ, मैं भी 4th ईयर लाइफ साइंसेस फ्रॉम अहमदाबाद यूनिवर्सिटी कर रही हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज कर्ता इनिशिएटिव जैसे जो एक्सेस प्रोग्राम्स है वो हम जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, और वो हम कैसे यूज कर पाते हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मेरे क्लासमेट्स भी थे जिनको शायद ये एक्सेस नहीं मिला, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं उसको चूज करूं या नहीं करूं। मेरे को करना ही था क्योंकि मेरे को पता है उसके बाद या तो मैं पढ़ूंगी या मेरा भाई। लोगों ने सोचा होगा क्या पता ट्रस्ट करना है नहीं करना, क्या पता कैसा होगा, कहाँ तक साथ देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे स्कूल में आती है। लेकिन वहां पे वो ट्रस्ट का एक फैक्टर होता है, दूसरा कि तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें करना ही है। तो ये सब में डिसाइड करना। कॉलेज में गई, 4th ईयर लाइफ साइंसेस किया है। कॉलेज की जर्नी लगभग सेम रही है, चैलेंजेस एंड ऑल। एक चीज जो प्रोफेसर आशुतोष सर आपने जो बात कही कि कोई बच्चा 10वीं के बाद अगर ग्रेजुएशन काम कर रहा है तो उसे 1 से 1.5 लाख पूरे जिंदगी में कमाएगा। कोई ग्रेजुएशन के बाद कर रहा है तो वो 15 करोड़ तक कमा सकता है। एक क्वेश्चन मुझे है अभी भी, मैं तो यूनिवर्सिटी कर रही हूँ अपनी एक नॉन यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है इंडिया में, एक नॉन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड है। मेरे भाई ने लोकल कॉलेज से किया है ग्रेजुएशन, उसका 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री था, BSc IT किया है उसने। एंड वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है कि उसको IT सेक्टर में एक अच्छा जॉब मिल जाए। और मैं शायद आफ्टर माई मास्टर्स I will do a good job in biotech industry or pharmaceutical industry. I will have that opportunity to apply, and they will trust that yes, she is capable of doing or work for our industries. लेकिन मेरा भाई एक लोकल कॉलेज से है, उसने अप्लाई किया, ट्राई कर रहा है अपॉर्चुनिटीज। ऑर्गेनाइजेशंस वो ट्रस्ट क्यों नहीं दिखा पाते हैं स्टूडेंट्स में जो लोकल कॉलेजेस से ग्रेजुएट करते हैं? एग्री कि जिन्होंने नॉन यूनिवर्सिटीज IIM, IITs, एक अच्छे कॉलेज से वो अगर ग्रेजुएट हुआ है उसके पास टैलेंट ज्यादा होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन आप वो ट्रस्ट दिखाओ जो लोकल कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो रहा है। शायद सब नहीं, लेकिन कोई तो होगा जो
शायद उनके लेवल पे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं उन कहीं ना कहीं तो मैच करेगा। तो हम वो ट्रस्ट क्यों नहीं दिखा पाते? ये क्वेश्चन हमेशा, लगभग 1.5 साल हो गया मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं तो कमा लूंगी, पापा को भी मेरे पे ट्रस्ट है, हाँ तेरा कुछ तो भी हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई को लेकर अभी भी वो टेंशन में रहते हैं कि उसका क्या, क्योंकि पापा बोल रहे थे तू कोई 2 साल का कोर्स कर ले उसके बाद कमाने लगना मेरे भाई को, लेकिन भाई को करना था ग्रेजुएशन, और मैंने भी बोला कि आजकल के जमाने में ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन करवा दिया, लेकिन उसके बाद क्या? ये क्वेश्चन मुझे हमेशा ना, एजुकेशन को सेम लेवल पे सब क्यों नहीं सर देखते हैं? पढ़ा तो उसने भी है, पढ़ा तो उसने भी है, तो अपॉर्चुनिटीज अभी भी डिफर क्यों करती है? ये क्वेश्चन हमेशा मुझे परेशान करता है, बाकी तो ठीक है। Hello. I am Rajiv. I am from Ahmednagar, Maharashtra. I come from a Dhangar community, which is basically known for shepherding in the Maharashtra and Goa regions. But there is no fixed place to stay and all for my community people. So it's like usually wherever there is grass for sheep, they'll usually roam there, and there's no education at all for them. But I would say luckily somehow my father, when he was young, he got into a sugar factory as a worker. He's still working there only. So that's where somehow I got access to education at a stable place, and I started my schooling. I got into JNV, and I completed my class 12 from JNV Ahmednagar. And now I'm in Vidyashilp University. I'll be completing my, I'm graduated now. I'm doing a 6 months internship at Ipsiter Analytics in Bangalore. And I would say I'm graduating as a data science and AI engineer, that I never thought of, because in my family no one has ever seen a computer or a laptop. So after my 10th, it was pre-decided that mostly I will just complete my 12th and I'll join my father either in a sugar factory only or somewhere nearby or some local shop and all. But I would say I got Karta's help in class 11th, and that's when I started exploring my interest. First of all, in the class 11th phase, mentors helped me in figuring out what I want to do exactly. So that time, I got little bit of clarity there. Okay, I can do this. I came to know about many courses, then universities and all. Then there was a big question that how will I get there? Because that's a big question, and when you're coming from this community and from a village, you don't know about it at all, because there are some local colleges nearby my house where people usually prefer to do a BSc or ITI or so now even I have my cousins, all of them are trying to do some diploma, some ITI, some vocational courses kind of stuff, and get into some labor works. So that's what is happening. But I think Karta helped me in figuring out that thing. Then after 12th, applying for these universities, helping me in the application process and all. And that's where I got into Vidyashilp. So it was again a great journey there. Everyone helped. And I would say my parents also sacrificed a lot, because I'm a single child, and they were thinking about my future more than, I would say, they were like, okay, you go to Bangalore, you study, so that our family and the community will get someone where, so like enter that community will get a hope that okay, someone is doing something great, so that they can also do it, they can also achieve that heights. Now when I go back to my village, there are many students who are now in 10th and 11th, so they usually call now, they come to my house, they talk, they ask about like, how did you do it, how can we do it? So now I guess there is some hope for them that okay, now he did it, so then he can help us and we can also reach that position. So that's how I would say this journey has been, and it's good. Okay, that's it. हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं पटना बिहार से हूँ। पालीगंज मेरा गांव का नाम है। तो मैं रिसेंटली अभी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ और मेरा स्कूलिंग थोड़ा इन लोग से डिफरेंट है। मैं एक एनजीओ से स्कूलिंग किया हूँ, जो कि मैं 13 इयर्स पूरा एनजीओ में रहा हूँ, जो कि शोषित समाधान केंद्र नाम है। वो एक मुसर कम्युनिटी के लिए रन करता है। तो मुसर कम्युनिटी एक तरह से बिहार, यूपी, झारखंड, ये वन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो कि आप बोलो तो हमारे कम्युनिटी में क्या होता है कि पहले सर्वाइवल देखते हैं। एजुकेशन तो ये सेकेंडरी है, पहले देखते हैं कि हमारा सर्वाइवल हो पाए कि नहीं हो पाए। तो मैं उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा स्कूलिंग शोषित समाधान केंद्र में हुआ और
चैलेंजेस ये रहा, मैं समहाउ कैसे भी करके स्कूलिंग किया। फिर ये रहता, मतलब क्वेश्चन आया कि 12th के बाद अब क्या। बट हमारे कम्युनिटीज में क्या होता है, मैं बड़ा बेटा हूँ घर का, तो होता है कि तुम बड़े बेटे हो तो अब फैमिली को सपोर्ट करो, एंड दैट इज द ऑप्शन। बाकी दूसरे का वो अपना जो भी है पढ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे, बट बड़ा बेटा हो तो तुम फैमिली को सपोर्ट करो। तो मैं 12th कंप्लीट करने के बाद जब मैं 12th में लास्ट में था, जब हमारा लास्ट एनसेम एग्जाम होने वाला था, तो करता इनिशिएटिव इंडिया फाउंडेशन हमारे स्कूल में विजिट के लिए आए। वो लोग थोड़ा बताएं स्कॉलरशिप्स और ये कि तुम लोग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत हम लोग भी डाउट थे, क्योंकि हमारे कम्युनिटीज़ वाले बाहर भेजना, वो लोग किसी भी को ऐसा लगता है कि रियलिटी में होगा कि नहीं होगा। देन समहाउ मतलब 5 साल पहले मैं दिल्ली आया था नोएडा वर्कशॉप के लिए, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था अपने सिटी से, तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था एक तरह से। आज मेरे पेरेंट्स भी आए हैं, वो भी मैं उनसे बात किया कि आप दिल्ली में आए हो फर्स्ट, वो भी आज फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल करके आए हैं दिल्ली, उनके लिए भी फर्स्ट टाइम। तो वो भी जो मेरा एक्सपीरियंस था वो भी सिमिलर सेम एक्सपीरियंस वो भी आज उन्होंने शेयर किया। तो जब मैं नोएडा वर्कशॉप में आया तो सब लोग से मिला जाना, और थोड़े बहुत मतलब स्कॉलरशिप के आइडियाज और ये कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ में तुम अप्लाई कर सकते हो, तो आइडिया है। तो मैं बहुत सारे 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, एंड फाइनली आई गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। तो फिर मैं वहाँ आज तो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो ये तो एडमिशन तो हो गया, बट समहाउ मैं यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करता था कि मैं इन लोगों के साथ कैसे बात करूंगा, कैसे अप्रोच करूंगा। मैं अपने आप को कॉर्नर में रखता था कि लोग मुझे देख तो नहीं रहे हैं, मैं किस तरह से ड्रेस कर रहा हूँ, इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आता था अपने माइंड में। तो 1-2 दिन हमारे फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो मैं सोचता था कि क्योंकि फाउंडेशन कोर्सेज में ये लोग क्या करवाते हैं कि डिफरेंट 4 फाउंडेशन कोर्सेज है, तो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज में पहले ही ये लैपटॉप से कुछ वर्क करना था। तो मैं तो कभी लैपटॉप यूज नहीं किया था, तो मुझे लगा कि अब तो नहीं हो पाएगा, मुझे क्विट करने पड़ेगा। क्योंकि फिर हम लोग हमारे कुछ फ्रेंड, वरुण भी था मेरे साथ, तो हम लोग आपस में बात करते थे कि ये हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आई गेस अगर मैं कह पाऊँ मेंटरशिप का अगर एक्चुअल अगर मैं कहूँ तो वहाँ पर अपर्णा मैम और ये शशांक सर हमारे यूनिवर्सिटी आए और वो गाइड किए हैं कि किस तरह से तुम लोग, प्रॉब्लम्स तो रहते हैं, एटलीस्ट हम लोग को हेल्प कैसे। पार्थ सर ऑलवेज मेंशन किए थे कि अगर इन केस तुम हेल्प नहीं मांगोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो हमने स्टार्टिंग में वो जो प्रॉब्लम हो रहा था यूनिवर्सिटीज़ को, जो भी मित्रा करके सिस्टम है, हम लोग ने रीच आउट किया कि हमें थोड़ा ये सब प्रॉब्लम और चैलेंजेस आ रहे हैं। एंड आई डोंट नो 4 साल मैंने वहाँ कंप्लीट किया और बहुत सारे लोकलाइट्स अहमदाबाद के फ्रेंड्स बनाए, और मैंने मल्टीपल इंटर्नशिप्स किए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। मेरा पहला इंटर्नशिप था टाटा ट्रस्ट में, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, जो कि एनजीओ है ये राजस्थान में, और सेकेंड ईयर में सीप में किया, अनुज सर मेरे मेंटर थे, एंड थर्ड ईयर में ट्रेंट लिमिटेड, और फोर्थ अभी तो मेरा जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, एंड अभी मैं करता इनिशिएटिव में अप्लाई किया हूँ और एज ए एम्प्लॉय जस्ट ज्वाइन किया हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना है, क्योंकि मुझे सोसाइटी को थोड़ा ऐसा था कि मुझे अपने कम्युनिटी के लिए काम करना है। क्योंकि शोषित समाधान केंद्र स्कूल है जो कि बच्चों को जो बच्चे को पढ़ाते हैं वो सिर्फ बॉयज़ के लिए और वो गर्ल्स के लिए नहीं है। तो हमारे मुसर कम्युनिटी में अभी भी गर्ल्स के लिए एजुकेशन के लिए वो ऑप्शन नहीं है। तो मैं सोचा था स्टार्टिंग में कि मुझे डेवलपमेंट सेक्टर में जाना है। अगर इन केस डेवलपमेंट सेक्टर में जाके गर्ल्स के लिए मैं कुछ कर पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम वरुण कुमार है। मतलब मैं और विकास हम दोनों क्लासमेट्स हैं और मतलब हम लोग बचपन से एक ही क्लास में पढ़े हैं, सेम स्कूल। व्हेन आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, तो मतलब आप लोग को ऐसा लग सकता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ सिमिलरिटीज। मैं भी सेम मुसर कम्युनिटी से आता हूँ। मेरा घर पटना बिहार से ही है। तो बचपन से ही हम लोग ऐसा स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है बच्चों के साथ जो भी मुसर कम्युनिटी आते हैं उसके। बट हम लोगों ने वो फेस किया है। व्हेन आई वाज मैं क्लास 1
व्हेन आई वाज इन क्लास 1 आई वाज स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी दलित समाज के बच्चे आते हैं मूसर के, उन्हें मतलब जो भी, क्योंकि सरकारी स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं, ब्राह्मण के बच्चे पढ़ते हैं, राजपूत के बच्चे पढ़ते हैं और दलित वगैरह पढ़ते हैं। तो मतलब जब मैं क्लास 1 में था तो वहाँ पे हमें अलग बैठने दिया जाता था। वी वर गिवन सेपरेट प्लेट्स फॉर हैविंग फूड, मिड डे मील्स वगैरह करके। वी वर हैविंग डिफरेंट टैप फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सो दीज वर समथिंग चेंजेस, दीज वर चैलेंजेस जो मैंने फेस किया। बट लकीली व्हेन आई पास आउट क्लास 1, उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया शोषित समाधान केंद्र में, जो कि एक दानापुर बेस्ड एनजीओ है जो सिर्फ हमारे समुदाय के लिए है। तो वहाँ से मैंने अपना क्लास 12 पास किया। एंड क्लास 12 पास करने के बाद दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि एट दैट टाइम अगर कर्ता इनिशिएटिव इंडिया फाउंडेशन हमारे स्कूल में नहीं आती, देन आई वुड हैव नॉट बीन द पर्सन हु आई एम राइट नाउ टुडे। बिकॉज क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। क्लास 12 के बाद जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, या तो वो भी उनका शादी हो गया, या तो वो लोग अभी घर पे मजदूरी वगैरह कर रहे हैं। बट अपर्णा मैम आई हमारे स्कूल में, और मैम के द्वारा ही आई वॉज एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एनजीओ कर्ता इनिशिएटिव। उसके बाद हमारा वहाँ पे एडमिशन हुआ, मुझे स्कॉलरशिप मिला अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पे आने के बाद सबसे पहली बात था कि मतलब दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम मैं अपने स्टेट से बाहर जा रहा था, बिहार से, पटना से। तो मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी डर लग रहा था कि बच्चा वहाँ पे जाके कैसे सर्वाइव करेगा। मुझे खुद बहुत डर लग रहा था। मतलब जब मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया था तो मेरी मम्मी मुझे बहुत कॉल कर रही थी। मैंने मम्मी को एक कॉल पिक नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज क्राइंग ऑल द वे इन द ट्रेन, बिकॉज दैट वॉज सो हार्ड फॉर मी। बट जब हम लोग वहाँ पे गए अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एवरीथिंग वॉज टोटली चेंज। दैट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम मैं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में गया था। वहाँ पे जाने के बाद मतलब वहाँ पे इतना डिफिकल्ट था, क्योंकि वहाँ के जो भी बच्चे लोग थे, दे वर मोस्टली टॉकिंग इन इंग्लिश और गुजराती। तो हम लोग गुजराती तो आती नहीं थी, एंड वी वर सो स्केयर्ड। थोड़ा सा हमें शाई था उन लोगों से बात वगैरह करने में। एंड वी प्लान कि हमें अभी घर जाना है, नहीं पढ़ना है यहाँ से। बट उस टाइम पे अपर्णा मैम, शशांक सर, दे वर द वेरी फर्स्ट पर्सन जो उन लोगों मैम वहाँ पे आई द फ्लाइट पकड़ के नेक्स्ट डे। मैम ने बहुत समझाया। पाथ सर वॉज ऑल्सो देयर। सर ने समझाया कि यू आर द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, तुम लोग अगर ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारी समाज आगे नहीं बढ़ेगी। आई एम रियली थैंकफुल टू मैम। मतलब क्योंकि अगर मैम नहीं आते तो हम लोग पक्का कॉलेज छोड़कर भाग जाते। ऐसा था, ऐसा केस आ चुका था। उसके बाद लेटर ऑन क्या हुआ कि मतलब मैं वहाँ पे सर्वाइव करने लगा धीरे धीरे। पाथ सर ने बहुत हेल्प की। पाथ सर खुद बोलते कुछ भी दिक्कत हो, इश्यूज वगैरह हो, मेरे पास आओ, हमसे बात करो। तो सबसे पहले हमारे दोस्त वहाँ पे नहीं बने थे, तो हम लोग जो भी वहाँ थे प्रोफेसर्स, हम लोग हमारे सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे प्रोफेसर्स ही बने थे वहाँ पे, जो भी प्रोफेसर्स थे वहाँ के। उसके अलावा फिर लेटर ऑन और जो कर्ता इनिशिएटिव का जो मेंटरशिप है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। हमें जब भी डिप्रेशन वगैरह कुछ मन नहीं लग रहा है, हम लोग शशांक सर को कॉल किया करते थे। शशांक सर बहुत हेल्प करते हैं। मतलब तुरंत में कॉल उठाकर, इफ यू आर एनी डिप्रेस्ड, ही वाज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस। उसके अलावा लेटर ऑन व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, I got the opportunity of doing an internship at Tata Trust along with him in under CMF, Center for Microfinance in Sirohi district. Later on, when I was in my second year, मैं नट्टी विलेज नोएडा में इंटर्नशिप, उन्नाव में इंटर्नशिप किया। उसके अलावा अभी नेक्स्ट 6 months before I was doing an internship at Karta Initiative, and currently I'm in my final year, so I would be graduating next year. And through all this journey जो भी मेरे पेरेंट्स वगैरह हैं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, मेरी मम्मी ने मेरे बहुत सपोर्ट किया। उसके अलावा आई एम रियली मोस्ट थैंकफुल टू अपर्णा मैम। मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब अपर्णा मैम ने और शशांक सर ने भी। सो आई हैड नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सेइंग दिस टू मैम, बट आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच मैम फॉर डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। And whatever the kind of respect I'm getting in society, it is only because of education and Karta Initiative. Thank you, ma'am. Hello, hi, good afternoon everyone. I'm Sumit Singh. Before I start, मेरे साथ मेरे नाना जी आए हुए हैं आज। नाना जी हेलो। वो मेरे नाना जी हैं। It's important because he was always there to me when I was in need. मेरे पापा मम्मी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। They passed 10th and 11th maths.
टिल 10th मेरे नाना जी ने मेरा सब कुछ देखा है, खाना पीना रहना. अब आई हैव स्टेड इन हिज होम, मैं अभी तक उनके घर पे रहता हूँ. फिर मैं 12th में नवोदय में गया. आई वाज इन नवोदय फॉर 11th एंड 12th. नाना जी वाज स्टिल देयर कि नहीं तुम जाओ, ठीक है, जो होगा हम देख लेंगे, कुछ नहीं होगा. देन करता आई, like you'll get scholarship, get mentorship, and being from Bihar, जैसा आशुतोष सर ने बोला, scholarship is a very new word for us. No one really know what scholarship is, how it works. So उस टाइम पे भी थिंग्स वर वेरी स्पेक्टिकल कि क्या होने वाला क्या नहीं होगा, किसी को पता नहीं था. आपको वाज लाइक ठीक है तुम देख लो, तुमको जैसा अच्छा लगता है, बिकॉज इज नॉट रियली इन दैट फील्ड. मम्मी का वही था, बट अगेन नाना जी वाज देयर, तुम करो जो होगा हम देख लेंगे, हम तुम्हारे पीछे खड़े हो, कुछ नहीं होगा. Thank you. And then Aparna ma'am was there. Every Karta mentor was there to help us, to make us understand what is scholarship. Because 12th तक मुझे पता भी नहीं था scholarship होती क्या really. How does college work? Then mentors helped us. Everyone helped us. Then I got into college. My first train journey alone was from Bihar to Delhi. मैं पहली बार अकेले travel किया था. हम सब ने, I think हमारा सबका पहला journey था वो. It was our first workshop in Noida. And again after my college I'm in Delhi, so it's a full circle for me. Then I went to college, Flame University in Pune. I graduated. I am first graduate from my family, so I'm happy for myself. I'm proud of myself. I'm proud of my family. Flame changed me a lot when I was back in my hometown. जब मैं घर पे था, आज अगर मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर पा रहा हूँ, अपर्णा मैम ये जानती है, शशांक सर ये जानते हैं, मैं जब 4 साल पहले था मैं ऐसे बात नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं थी. आई कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ 10 पीपल एंड स्पीक एनीथिंग. आज अगर मैं बोल पा रहा हूँ, दैट्स बिकॉज ऑफ द मेंटरशिप, दैट्स बिकॉज ऑफ द कॉलेज, द मेंटर विच आई गॉट, द प्रोफेसर विच आई गॉट, द फ्रेंड्स विच आई गॉट. फर्स्ट टाइम जब मैम और सर कॉलेज आए थे, मेरी प्रॉब्लम, मैम ने पूछा क्या इशू फेस कर रहे हो. फर्स्ट वीक मैंने बोला मैम फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं. मैम ने बोला ट्राई करो, हो जाएगा. टुडे व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई हैड 176 WhatsApp text, congratulations on your graduation from my junior, senior, everyone. So हाँ, मैंने खुद पे बहुत काम किया. I've evolved over the time, over this 4 years. बहुत इंजरी हुई, बहुत हड्डियाँ तोड़वाई, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, तो it was fun. I learned a lot, made a lot of friends, lot of memories. Currently I started working. I'm working in a real estate group at Pune called Chandrang Developers. They are into real estate. I'm working with them as a head of marketing. So I'm heading their marketing. It's fun to work. Yeah, that was my journey. Thank you very much. Thank you everyone. And during my college time, I've done a lot of internship. First internship at JJSS, Ashish Sanjan Jha. I would always be thankful to him. He showed me what real ground is. Even if I'm from Bihar, मुझे वो नहीं पता था जो वो उन्होंने मुझे दिखाया. He showed me the true reality of Bihar. Then वो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ. Second internship with Firoza ma'am, Arshia ma'am, everyone. Thank you very much for teaching me everything we did from the ground. Some more Tata Trend I was working. Third year, Anuj sir, thank you very much for LCSR Impact. You gave me a huge chance to learn and grow with you. And then I worked with Aman Bhaiya at Natti Village in Uttar Pradesh. I was heading their digital marketing. It was a great journey. And talking 10 years, 15 years, 20 years down the line, what I want to become, what I want to do in my life. जैसे मैं अपने घर से बाहर आया, घर को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, पापा मम्मी, मेरे 4 भाई बहन हैं, मैं नहीं चाहता आगे अभी से 10 साल बाद और भी कोई घर से बाहर है, उनको बिहार से बाहर जाना पड़े. मुझे बिहार में ऐसा इकोसिस्टम बनाना है, ऐसी बड़ी कंपनीज बनानी है ताकि लोग वहां रुक के वहां पढ़ सके, वहां कर पाए सब कुछ काम, उनको अपना घर नहीं छोड़ना पड़े. अभी भी बिहार से 70% लोग माइग्रेट करते हैं या फिर काम करने के लिए करनाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जाते हैं. वी ऑल नो. आई वांट टू मेक अ सिस्टम कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े. यू वर्क इन योर होम टाउन, आपको पैसा है वहां भी मिलेगा. So future मेरा सोच वो है कि I want to work in that field. I want to grow myself with my whole, with my community, with my people, everyone. Thank you everyone. Thank you. That's it.